and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. We work on empowering educators, elevating education. My dear educators, in today's video, we're going to talk about HPC, yes, Holistic Progress Card. Though in our previous videos also, we have discussed in detail about what is HPC, what are developmental goals, how to create HPC. But in today's video, we shall discuss a few exemplars for different stages, starting from Balvatika 1, 2, and 3, and then grade 1, 2, and 3, right? Because these classes are already covered in NIPUN Bharat. So in each video, we shall be talking about one holistic progress card. So in today's video, my lovely educators, we're going to talk about HPC exemplar for Balvatika 1, or maybe you call it pre-nursery, or maybe you call it nursery. As per NEP 2020, we should have 3 classes before class 1, where different circulars, they are there with all of us, right? And when the students, they are reaching class 1, for that, they should be 6 or 6 plus, right? So for the 3 or 3 plus years of child who takes admission in Balvatika 1, for that child, we should have this kind of holistic progress card. Yeah. So what is there in a holistic progress card? So in his exemplar in front of you, we will be sharing the personal details of the child, right? And you can use the child's photograph, maybe passport size photograph, as we are using earlier in our different report cards, or maybe you can use a child's bigger picture also. You can use a proper full page as we create some portfolios for the children. That's entirely up to you how you want to go ahead with that. So my dear educators, as it is visible to you on your screen, let me, okay. So here you go, my dear educators. Holistic progress card, name, mother's name, father's name, address, date of birth, height and weight measurements, like health card, because we are talking about holistic progress card, which cover each and everything, 360-degree assessment, personal hygiene of the child, about the clothing, about the cleanliness of the body, like different parts they haven't mentioned as it is there in the health card. So my dear educators, now, coming to the next page, as it is visible to you on the screen, journey from Annamaya Kosha to Anandamaya Kosha. We're going to talk about food habits, right? Like competencies, what kind of competencies we would like to develop. If you look at this format, we are covering here 2 terms: efficiency in term 1, efficiency in term 2, and then for the rubrics we have got 3 levels: beginner, progressing, and proficient, right? So, and that is the same in term 2 as well. Let's talk about the competencies that are highlighted over here on this page 1 to 16, and then here till 35. So if I talk about shows a liking of food, doesn't waste food, practices being hygiene, and then awareness of safety in the movements while walking, while running, while cycling, once awareness of safety about himself or herself, or maybe others as well, and differentiates shapes or colors. What all different parameters? I'm going to read each of these parameters. Matches visual symbols with the name patterns, differentiates sounds, identifies good and bad smell, and differentiates by touching hard, soft, rough, smooth, begins to catch, throw, kick with basic body control. The child has a control over the body. I mean, we're going to talk about the competencies that are related to the child, about his or her taste, the food liking, about the safety, right? And stands and balances on one foot for a short time. I mean, we are covering all the physical aspects also, shows fine muscle coordination, eye-hand coordination, walks backward, tiptoe walking, walks carrying light weights, and expresses feelings and recognizes simple emotions. And then we are talking about interacts well with other children and familiar adults only the child talks, right? I mean, the child doesn't talk to the strangers, right? And begin to play with other children. And then if I talk about the next one is follow simple classroom instructions and winds up activities appropriately, identifies the missing parts of the puzzle or whatever activity you are doing, and connects objects and can substitute like what we can use in place of this very object, and understand basic cause and effect relationship, ice melts in the sun, okay, salt dissolved in water. When we talk about cause and effect, मतलब एक 3 साल के बच्चे की अगर हम बात कर रहे हैं, we are not talking about कि बहुत ही डिटेल में, मतलब
course we're gonna talk about age appropriate. बच्चे को पता है कि जब इसमें सॉल्ट को हम वाटर में डालेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, आइस को बाहर रखेंगे, आइसक्रीम बाहर बड़ी बड़ी मेल्ट हो रही है, आइस धूप सन में होगी तो इट विल मेल्ट, राइट? तो सच काइंड्स ऑफ स्मॉल कॉज एंड इफेक्ट चीजों की हम बात कर रहे हैं, राइट? एंड देन कैन यूज अप्रोप्रिएट टूल्स फॉर आर्ट एक्टिविटीज, can sort objects based on two categories, size and shape, length and color, and connects objects and their uses, recognizes simple patterns in the surroundings. आसपास हमने क्या पहना है, उसमें क्या हमारे जो हैं पैटर्न्स हैं, लाइक बच्चा अपनी ड्रेस में, दूसरे की ड्रेस में, वॉल पर, फ्लोर पर, everywhere there are patterns. Maybe there is a rug in the room, maybe there is some design on the wall or maybe on the door, and the child is able to understand the basic patterns, right? And says numbers till 10 in a correct sequence and arranges objects in an order, shape, size, or story cards up to 3. I mean, how many cards we are talking about? And compares two objects. दो object को compare करना किसी भी form में, हमने पहले भी बात किया, we have talked about कि उनका size, उनका shape, उनका color, उनकी length, उसके basis पर उनको compare करें. And then matches objects based on shapes और size और color, उसके basis पर match करके अलग अलग उनकी sorting and categorization, name करना shapes कौन कौन सी हैं, and even solves in inset puzzles of the shapes, and then listens and repeats rhymes and the poems, and listens and follows simple verbal instructions, whatever is being given by the teacher. And here we are talking about in these classes, obviously, when you are talking to the children, you are bilingual, you are giving instruction in both languages, or maybe if you're talking in English, then you're repeating the same in the mother language as well. And then has 5 to 7 minutes attention span for listening to the stories. 5-7 मिनट तक अगर बच्चा carefully सुन रहा है, उसके बाद ठीक है थोड़ा हिलजुल भी रहा है, that is perfectly fine. Okay, वो पूरी आपकी 15 मिनट की स्टोरी अगर एक ही वन गो में नहीं भी सुन रहा है तो दैट इज परफेक्टली ओके, नॉट एन इश्यू, राइट? And if we're gonna talk about has vocabulary for simple familiar things, जो भी उस बच्चे ने चीजें आसपास अपने घर में, अपने आसपास, अपने स्कूल में, क्लासरूम में चीजें जो देखी हैं, and the child is well familiar with the vocabulary, right? Now, if I talk about the next one, it is pretends to read books, differentiates pictures and text in a book. एक book को वो देखता है, उसमें images कौन सी हैं, उसको interpret करने की कोशिश करता है, connect करने की कोशिश करता है, understand करता है, uses writing material to scribble, and I mean maybe such as crayons and chalks, and uses variety of body movements to effectively sing rhymes, songs, and responds to the artwork verbally and non-verbally through gestures and through words, जैसे भी बच्चा करना चाहे, and can focus on self-initiated activities, sustains interest in 2 or 3 tasks, and practices remembering, recalling, can make transition from one activity to the next. ऐसा नहीं कि बच्चा एक ही चीज के ऊपर फोकस है और वो दूसरी चीज पर जाने में उसको टाइम लग रहा है या इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है, या मतलब whatever it is, I mean any kind of hesitation है या कुछ बच्चे को कुछ problem है, I mean that is not there. Enjoys outdoor activities, observes and imitates adult behavior for classroom norms, and ability to shift attention to other tasks. Now, ये आपने सारे जो है मैंने points 45 हैं, हमने इसको जो मैंने पहले की वीडियो थी उस वीडियो में मैंने आपको अलग अलग डेवलपमेंटल गोल के अंडर इन सारी चीजों को कवर करके आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, दैट इज इन डिटेल एज पर निपुन गाइडलाइंस. जो हमारे पास डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स हैं, ये उसकी अलग अलग हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्टर्स हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं, अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स की, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताई हैं. अगर आप टू बिगिन विद यू वांट टू स्टार्ट विद दिस काइंड ऑफ एचपीसी, दैट इज आल्सो परफेक्टली ओके, दैट इज एन एक्स्ट्रा, आई मीन गिवन to us as per NIPUN, and here is the areas that need attention and suggestions they would like to give to the parent for the betterment of the child's performance. And here the signatures, obviously the जैसे हम report card में करते हैं. So this was for Balvatika 1, right? So इस वीडियो में हमने बालवाटिका 1 के बारे में डिटेल में डिस्कस किया. अगर हम बालवाटिका 2 को भी देखना चाहें, देखिए सेम पैटर्न है इसका, और उसके बाद में नेक्स्ट अगर इसके पॉइंटर्स जो लिखे हुए हैं, लेट्स टॉक अबाउट दीज पॉइंट्स आल्सो. कॉम्पिटेंसीज कौन सी बच्चों में डेवलप करेंगे, पैटर्न टोटल सेम है, आपको
नर्सरी से लेकर क्लास 3 तक का सेम पैटर्न बनाना है। आप डेवलपमेंट गोल वाइज करना चाहते हैं या आप एक साथ करना चाहते हैं, दैट इज एंटायरली अप टू यू, राइट। पर आपको कवर करने हैं सारे के सारे डेवलपमेंटल गोल। आइडेंटिफाइज हेल्दी अनहेल्दी फूड आइटम्स, हम उसके और थोड़ा सा बड़े लेवल पर आ रहे हैं, प्रोग्रेशन वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड ड्रेसेस इंडिपेंडेंटली, बच्चा एक LKG की बात हो रही है, लोअर किंडरगार्टन, चाहे आप उसको जूनियर KG बोलिए, राइट, चाहे आप उसको कई स्कूल्स में प्री नर्सरी बाल वाटिका 1 को कहते, तो चाहे आप नर्सरी कहिए, तो नाम में कुछ नहीं रखा है, हम लेवल 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। And then addresses independently, keeps school classroom neat and clean and uses dustbins, keeps personal belongings safe, अपनी चीजों का ध्यान रखता है बच्चा, उसके लिए उसको होता है कि ये मेरी चीज है, मैं लेके आया हूँ, मैं लेके आई हूँ, आई हैव टू कीप इट वेरी केयरफुली। एंड केयरफुल यूज ऑफ हार्मफुल मटेरियल सच एज सिजर्स, नाइफ, मैच स्टिक, बच्चे को पता है कि इनके क्या हार्म है और उससे बच्चा बच के रहता है। In careful with the strangers, like when the child is communicating with the strangers, the child is very very careful. I'm not comfortable, I need to take support of my teachers or maybe the parents or maybe anyone, like the child knows. Now differentiate various shades of the colors and group objects based on dimension, but dimension के accordingly, length, breadth, height के accordingly बच्चा group में डिवाइड करना शुरू करता है, उसको ग्रुपिंग करता है, सॉर्टिंग करता है, कैटेगराइज करता है। Distinguishes high and low pitches in sounds and distinguishes slow and fast beats in the sounds as well, and differentiates fragrance of the flowers and the fruits। जो हम ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी करते हैं, बच्चा स्मेल करके भी, आई मीन सिर्फ बिना देखे बता सकता है कि किसकी फ्रेग्रेंस है, कौन सा फ्रूट है, कौन सा फ्लावर है, जो भी आपने बच्चों के साथ जितने शेयर कर रखे हैं। एंड कंपेयर्स टू ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन सॉफ्ट हार्ड, हार्ड कोल्ड, रफ स्मूथ, catches, throws, kick the ball with a good care, balances body on various surfaces, and motor control better for fine motor eye hand coordination activities। different बच्चे के साथ हम फाइन मोटर और क्रॉस मोटर जो एक्टिविटीज करते हैं, हम फिजिकल पार्ट को कवर कर रहे हैं। पहले वाला डेवलपमेंट गोल हमारा फूड से रिलेटेड था, अब हम बच्चे की हेल्थ वगैरह, उसकी फिटनेस की बात कर रहे हैं, जैसे वॉकिंग है, क्रॉलिंग है, क्लाइंबिंग है, जो जो हम बच्चे को स्टेयर क्लाइंब करना या जंपिंग ऑन द 2 feet एंड मूविंग द स्मॉल स्मॉल फर्नीचर, चेयर्स को यहाँ से वहां से ड्रैग करके लेके जाना, उन्हीं के साइज की छोटी छोटी होती हैं, द चाइल्ड इज एबल टू डू दैट वेरी कंफर्टेबली without stressing himself or herself। Identifies self as a member of the family, class, neighborhood, बच्चे को पता है कि मैं अपनी क्लासरूम का, अपनी फैमिली का, अपने नेबरहुड का एक हिस्सा हूँ। एंड एक्सप्रेसेस इमोशंस थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल मोड्स, ठीक है, बच्चा अपनी नाराजगी, अपनी खुशी, जो भी है, अपना दुख, परेशानी अगर बच्चे को है, वैसे तो बच्चे हमेशा खिलखिलाते ही अच्छे लगते हैं, कि वो अपने जो भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम भी है तो वो अपने जेस्चर्स के थ्रू या वर्ड्स के थ्रू इजिली कम्युनिकेट करता है, हेजिटेट नहीं करता है। assist teacher in organizing the class and the classroom activities as well, कि टीचर का एक बडी बन के उसकी हेल्प करता है कि हाउ टू अरेंज द क्लास, अपने आप वॉलंटियर करता है उस चीज के लिए। आइडेंटिफाइज एंड डिस्क्राइब्स कॉमन एनिमल्स एंड द बर्ड्स दैट आर देयर इन द सराउंडिंग्स एंड आइडेंटिफाइज 3 to 5 मिसिंग पार्ट्स ऑफ द पिक्चर ऑफ द फेमिलियर ऑब्जेक्ट। अगर बच्चे को कोई फेमिलियर ऑब्जेक्ट है, उसकी पिक्चर देखता है तो देख के बता सकता है कि इसमें ये नहीं है, ये नहीं है, ये चीजें मिसिंग हैं। and applies known information in a new context। देखिए हम अभी से ही बच्चों को एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं कि जो बच्चे की इंफॉर्मेशन बच्चे को है वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बच्चा अप्लाई कर सकता है, छोटी छोटी सिचुएशंस में, इजी फेमिलियर सिचुएशंस में। एंड देन सॉर्ट्स ऑब्जेक्ट्स इनटू 3 ग्रुप्स, के साइज के अकॉर्डिंगली, वेट के अकॉर्डिंगली, हाइट के अकॉर्डिंगली वो बच्चा उसको डिवाइड कर सकता है। सेज नंबर्स इन द करेक्ट सीक्वेंस अप टू 20 and then arranges in order based on size up to 3 levels, right? And then combines 2 groups and counts them, shares objects equally to the 2 recipients। बच्चे को पता है कि sharing is caring, किसको 2 जनों में बांटना है, 3 जनों में बांटना है, ये मेरा है, ये मेरी फ्रेंड का है, तो उसमें डिवाइड कर रहे हैं, तो child is distributing equally, right? And classifies by the 2 factors, colors and the shapes, and then matches shapes with different colors and the sizes, follows instructions with multiple steps, can do length and weight comparison of the 2 objects। 2 objects की length क्या है, उनका weight क्या है, उसके accordingly the child is able to compare। Let's read more pointers। Identifies Indian coins, उसको अपने देश की करेंसी का पता है, ये मेरे देश की करेंसी है, ये कौन से सिक्के हैं, ये कौन से नोट हैं, उसको थोड़ा सा जो भी आप बच्चे को सिखाना चाहें, बच्चे को पता है कि मेरे देश की करेंसी है, ये पता होना चाहिए, right? And then names the basic shapes
appropriately, like circle है, square है, triangle है, बच्चे को मालूम है. Okay, एंड आप इससे रेलेवेंट एक्टिविटीज कराइए पूछने के लिए. हर वक्त ड्रॉ करके नहीं पूछेंगे बच्चे से, राइट? सराउंडिंग्स में बच्चा उसको देखने और उसको रिकॉग्नाइज करे. यूजेस आर्ट मटेरियल विद ईज, लिसन्स एंड सिंग्स अलोंग डिफरेंट सॉन्ग्स विद इंटोनेशन एंड जेस्चर्स. बहुत अच्छे तरीके से बच्चा पार्टिसिपेट करता है, सिंग करता है प्रॉपर इंटोनेशन के साथ, जेस्चर के साथ, and initiates a conversation with peers and teachers, narrates daily experiences, recalls characters and steps in a story, and retells in own words, combines 2 to 3 syllables to form simple words, holds books, turns pages, follows from पता है कि left से right में जाना है when we are going ahead with the reading pattern, right? And reads simple 2 syllable words बच्चा पढ़ सकता है, and participates in shared reading along with the teacher, reading picture, the big books. I mean, we have to get a big picture books, big font size for the students who are there in the lower kindergarten, and uses writing or drawing tools with ease and fluency. अच्छे से आराम से अपनी coloring, sketch pen, अपने crayons, अपने you see sketch pen, जो भी आप बच्चा use करता है, pencil, and all the child is able to use it fluently. And begins to write letters they recognize, uses letters to form simple words, and draws and paints with more accuracy, creates 3 dimensional forms with clay dough. बच्चे जितना clay dough के साथ करेंगे उनकी handwriting उतनी better होगी, उनकी जो ये fine motor skills हैं उसके बाद बहुत अच्छी develop होती हैं उससे. जब वो अपने हाथों से clay के साथ करते हैं, gross motor skill develop होती है, और धीरे धीरे pencil holding उनको आती है, कैसे वो shape करते हैं, उनकी ये muscles जो सी उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, राइट? एंड दे आर एबल टू डू इट प्रॉपर्ली, एंड प्रोड्यूसेस वैरायटी ऑफ साउंड्स यूजिंग ऑब्जेक्ट्स, वॉइस एंड इंस्ट्रूमेंट्स, एंड शेयर्स आइडियाज एंड मेथड्स इन आर्ट एक्टिविटीज, शेयर्स रिस्पॉन्सेज विद द पीयर्स, दूसरों के साथ भी शेयर करता है अपने रिस्पॉन्सेज, फोकसेस अटेंशन, स्टेज विद टास्क्स दैट इंटरेस्ट एंड इनहिबिट्स इंपल्सिव बिहेवियर, शोज क्यूरियोसिटी इन द नेचुरल एनवायरनमेंट. उसको अपने आसपास के चीजों के बारे में जानने की जिज्ञासा है, वो उत्तेजित है उनके बारे में जानने के लिए, बट उसका बिहेवियर जो है वो इम्पल्सिव नहीं है, उसको रोकता है कि किस तरीके से रिएक्ट करना है मुझे और यहाँ रिस्पॉन्ड करना है. उसको ये चीजें धीरे धीरे समझ आने लगती हैं, राइट? एंड अटेंशन उसकी पूरी फोकस्ड रहती है, टास्क जो कर रहा है उसके ऊपर पूरा ध्यान होता है उसका. एंड फॉलोज क्लासरूम नॉर्म्स विद द टीचर क्यूज. टीचर जो इंस्ट्रक्शन देता है, कुछ क्यू देता है, उसके अकॉर्डिंगली क्लासरूम के जो इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करता है कि अभी असेंबली के लिए जाना है, अभी बैठना है, अभी खड़े होकर एक्टिविटी करनी है, अभी यू हैव टू बी इन अ क्यू, लंच के लिए जाना है, वॉट एवर इट इज. सी अगर हम मेरी ये 45 थे पहले हमारे पास पॉइंटर्स 55 है, इन पॉइंटर्स का हमारे पास क्या मतलब है? सिर्फ हमने ईयर के एंड में इनको असेस नहीं करना, बल्कि राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे पास ये पॉइंटर्स हैं, हम इनके ऊपर वर्क करें, राइट? सो ये नहीं कि हम बच्चे का सिर्फ असेसमेंट या उनके मार्क्स दे रहे हैं. शुरू से हमें पता है कि ये डिस्क्रिप्टर है, हमें इसके ऊपर बच्चों को असेस करना है, एंड देन वी हैव टू वर्क ऑन दीज, राइट? सो दिस विल बी देन होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड का रियल परफॉर्मेंस. एंड इफ वी टॉक अबाउट बालवाटिका 3, इसमें हमारे पास सेम वही पैटर्न है, और उसके बाद हम इसके क्या पढ़ेंगे? हम इसके कॉम्पिटेंसी लेवल्स को बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से लिखे हुए हैं. रिकॉग्नाइज एंड एक्सप्लेन्स फूड्स फ्रॉम द डिफरेंट फूड ग्रुप्स. बच्चे को फूड ग्रुप अलग अलग पता है, उसके बारे में जब आप थोड़ा सा बच्चे को बताना शुरू करते हैं अलग अलग फूड ग्रुप्स के बारे में. अब देखिए यहाँ पर हम बच्चों को बता सकते हैं ये हेल्दी है या अनहेल्दी है, इससे आपको एनर्जी मिलती है, आप स्ट्रॉन्ग बनते हो, राइट? आपको इससे ग्रो करोगे, यू हैव टू हैव मिल्क. तो बच्चा उन छोटे छोटे, ये नहीं कि मैं आप बात करें कि बैलेंस डाइट के हर एक कंपोनेंट्स के बारे में बच्चा बताना शुरू कर दे, but at least the child is able to understand, right? कि फ्रूट से आपको क्या मिलता है, थोड़ी थोड़ी चीजें आप बच्चों के साथ जरूर डिस्कस करें. पार्टिसिपेट्स इन प्रिपेयरिंग स्नैक्स. थोड़े से बच्चों के साथ जो है हम कुकिंग विदाउट फायर की कुछ एक्टिविटीज करते हैं. बच्चा खुद इनिशिएटिव लेता है. आपने भी देखा होगा घर में बच्चे, माई चाइल्ड इज ऑल्सो इन अपर किंडरगार्टन, वो बच्चा क्या करता है, मेरे को भी किचन में करना है, आई वांट टू गो टू द किचन, मैं भी कुछ बनाऊंगी, मैं भी कुछ करूंगी. तो क्या है कि बच्चा उसमें इनिशिएटिव लेता है, तो आप ये छोटी छोटी एक्टिविटीज उनके साथ कर सकते हैं स्कूल में. And then he gets variety of foods without wasting. बच्चे को ही हम सिखाएंगे, राइट? तभी उसके ऊपर हम असेस करेंगे. ये नहीं कि बच्चा वेस्ट कर रहा है, पहले आप बच्चों को सिखाओ. ये being a teacher is our responsibility, being a parent is our responsibility. जब हम सिखाएंगे तो धीरे धीरे obviously the child learns, and तब आप उसकी असेसमेंट करेंगे. Maintains personal belongings in good shape. पहले तो बच्चा ध्यान रखता था कि ये मेरी चीज है, but now what the child is doing कि
अच्छे से रखना है, मेंटेन करना है, डस्टबिन में कोई चीज फालतू है उसको थ्रो करना है, क्लीन करना है, इन चीजों को बड़ा अच्छे से संभाल के रखता है। एंड फॉलोस रोड सेफ्टी रूल्स इंडिपेंडेंटली, राइट। तो थोड़ी सी गली में बच्चा मेन रोड पर, तो ठीक है हम नहीं भेजते इतने छोटे बच्चे को अकेले, घर से बाहर अगर बच्चा पार्क तक जा रहा है, रोड क्रॉस कर रहा है थोड़ी सी, तो थोड़ा सा उसको पता होना चाहिए थोड़े थोड़े रूल्स का, कि कैसे मुझे वेट करना है, क्या है, ये हम ही सिखाएंगे उसको, राइट। आइडेंटिफाइज ट्रैफिक सिग्नल्स, कि किस पर क्या करते हैं, वो लाल बत्ती, वो पीली वाली, वो हरी वाली, सबका उसको मालूम है। एंड देन सीक्स हेल्प इन इंजरी एंड इन अनसेफ कंडीशन सिचुएशंस, राइट। पता है बच्चे को कि मेरे को प्रॉब्लम है, मुझे मम्मी की, पापा की, कौन मेरे पास है, दादी है, दादू है, कौन है, मुझे किसकी हेल्प सबसे पहले लेनी है, कौन नहीं है, राइट। तो किस कौन है कौन नहीं है उसको पता है, कि स्ट्रेंजर्स हैं उनकी हेल्प नहीं लेनी, किसको अप्रोच करना है, क्या करना है, द चाइल्ड नोज इट प्रीटी वेल। एंड अटेम्प्ट्स टू प्रिडिक्ट द रिजल्टिंग कलर व्हेन टू कलर्स आर मिक्स्ड, राइट। जो मेरा बच्चा भी बहुत पूछता है, रेड और येलो को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये सारे बच्चे को आप मिक्सिंग कलर का जरूर सिखाएंगे जब वो कलर करते हैं तो। एंड देन ग्रुप ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, कैसे करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बेसिस पर grouping, recalls and matches visual symbols using picture cards, and then recognize the smell that indicate danger, कि बच्चे को थोड़ा सा बताएंगे कि धुआं उठ रहा है, ऐसी स्मेल है तो दैट इज डेंजर हो सकता है, फायर हो सकती है कहीं, तो थोड़ा सा बच्चे को हम ये बताएंगे। एंड देन seriates 3 to 5 objects based on characteristics soft to the hardest 5 levels, right। so soft है, hard है, उनको अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंगली बच्चा 5 लेवल तक कर पाए। catches, kicks and throws different sized balls, एक ही साइज की नहीं, अलग अलग छोटी बड़ी, उनको ऐसे कैच भी कर पाए। एंड देन hops 10 to 15 steps, shows good body balance, balances things on head and in hand, rides bicycle well, right। ये हमारे हो गए उसके points। And then the next one is the coordinates fine muscle movements, drawing, cutting, threading, pasting, बच्चे को ये छोटी छोटी जो fine motor skills हैं वो आनी चाहिए। And then jumps from 3 feet, 3 feet कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, बच्चा जंप कर सकता है, आप उसको सिखा सकते हैं। कैन शेयर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन, बच्चे को अपना एड्रेस, अपना मामा पापा का फोन नंबर, डिटेल्स, वो सारी फैमिली की मालूम होनी चाहिए वो। एंड देन डिस्क्राइबिंग फीलिंग्स, शेयरिंग इमोशंस विद अदर्स एंड बिगिंस टू इंटरेक्ट विद द अनफेमिलियर एडल्ट्स। थोड़ा थोड़ा घर में कोई जैसे मेहमान आए, स्कूल में अगर आपके कोई और टीचर क्लास में आती है, सबसे लगता है कुछ है, तो चाइल्ड इज कंफर्टेबल कि मैं इनसे बात कर सकता हूँ। जो थोड़े अनफेमिलियर लोग हैं उनके साथ बातचीत करना बच्चा सीखता है, कैसे इंट्रोड्यूस करना है, कैसे बात करनी है। प्लेज विद पीयर्स विदाउट द कंपनी ऑफ द एडल्ट्स, राइट। अपने आप बच्चा खेल सकता है। एंड नहीं तो छोटे छोटे बच्चे क्या बोलेंगे, मम्मी बास ही रहो, मैं खेल रहा हूँ, मम्मी यहीं बैठे रहो, ऐसे बैठे रहो। तो नाउ द चाइल्ड इज कंफर्टेबल। और अब आप सोचोगे रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं तो मम्मी की बात कर रहे हैं, तो स्कूल में भी ऑब्वियसली यू हैव गॉट इंडिपेंडेंट प्ले, यू हैव गॉट गाइडेड प्ले। व्हेन एज अ टीचर आप गाइडेड प्ले कराते हो तो यहाँ बच्चा, द चाइल्ड इज रेडी फॉर द इंडिपेंडेंट प्ले एंड मेक्स एंड मेंटेन्स फ्रेंडशिप विद वन चाइल्ड। बच्चे के दोस्त बनना शुरू होते हैं। आप देखते हो कि बच्चा कहता है मेरी मेरी फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड है, मेरे को यहीं पर बैठना है, इनके साथ बैठना है, इसके साथ खेलना है। तो बच्चे के अपने इंटरेस्ट, अपनी लाइकिंग्स डेवलप होती हैं। इनिशिएट्स एंड प्लान्स प्ले एक्टिविटीज विद अदर चिल्ड्रन, कि किस तरीके से आई विल बी बॉस एंड आई विल बी लीडिंग, ये एक्टिविटी करेंगे, ऐसा खेलेंगे, ये गेम खेलते हैं। shows independence and responsibilities in completing tasks and follows simple rules of the school, performs appropriate chores at home and school, identifies 4 to 6 missing parts in a picture, recognizes hierarchical relationships in categories, animals and their young ones, कि ये एनिमल है, ये उसके बच्चे हैं, दिस इज द टाइगर, दिस इज कब, ये उसका बेबी है, राइट। तो इस तरीके से काउ है, काफ है, कौन बेबी है, कौन मदर है, उसकी हायरार्की उसमें वो चेक कर पाता है। एंड देन कनेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स एंड देयर यूजेस, शोज अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये हमने पहले नर्सरी के भी बात किया था। यूज अप्रोप्रिएट टूल्स फॉर आर्ट वर्क, एंगेजेस विद डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेल फोन्स, टैबलेट्स, शोज क्यूरियोसिटी की इसमें क्या है, कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। राइदर आई वुड से नर्सरी का भी बच्चा यूज करता है। sorts and creates new patterns based on different features, colors, shapes and sizes, and says number names up to 50, counts up to 20 accurately, counts objects in any order accurately, understands the concept of zero as a number,
देखिए अब जीरो आप यहीं पर इंट्रोड्यूस कराया है बच्चों को, ये नहीं कि बड़ी क्लास में जाके बच्चा पढ़ता है, राइट? व्हेन द चाइल्ड इज राइटिंग, ऑब्वियसली रादर आई वुड लाइक टू से बच्चे जब काउंटिंग लिखते हैं, यू शुड स्टार्ट इट फ्रॉम जीरो. मेनी ऑफ द स्कूल्स दे आर डूइंग इट 0 1 2 3 4 5 then 9, and then they will be writing the tens in another line, 10 to then 19. कई स्कूल्स में हमने भी जैसे पढ़ा है, अगर 1 से लेके 10 and then 11 से लेके 20 हम ऐसे लिखते थे, but actually the correct pattern should be 0 to 9 and then 10 to 19. Okay, and then says the number names up to 50 and counts up to 20 accurately, counts objects in any order accurately, understands the concept of zero as a number, and then we already talked about this, understands face value and positional value of the numbers, and then arranges up to 5 objects in terms of size, length, weight in increasing and decreasing order, recognizes Indian numerals up to 9, combines 2 groups up to 9 and recounts, shares objects equally among 4 to 5 children, matches and classifies objects alag-alag criteria के accordingly, and uses positional words inside, below, above, थोड़े से positions के बारे में, prepositions के बारे में बच्चा बात करता है, and draws 2D shapes with some accuracy, compares objects based on their length, weight, and volume, knows the names of the days, months, and the year, and then identifies Indian currency notes, and recites 4 to 5 sentence rhymes and creates new rhyming words, gives clear instructions to the short tasks, the peers and adults, identifies the plot and characteristics in a story. एक स्टोरी के अंदर उसके प्लॉट के अंदर कौन प्लॉट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सीक्वेंसिंग क्या है, पर्सनल एंडिंग भी दे सकता है ट्वीक करके, 3 to 4 syllable words पढ़ सकता है, speaks about books, reads 3 to 4 words, and now we have here I'm sorry, participates in guided reading along with the teacher. As you guide, so the child reads books and short poems aloud, talks to others about the books. दूसरों से बताते हैं बच्चे कि ये बुक है, आप क्लास में भी कर सकते हो, whatever you have read, share with your friends, right? And writes letters and forms simple words and sentences. ये आपके एंड तक बच्चा करना शुरू कर देता है कि यूकेजी के एंड तक. Writes short words on being called out, in collaboration with peers, creates large scale work, musically distinguishes tempos, pitch, instrumental and vocal productions. म्यूजिक की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे म्यूजिक की क्लास है, आप अपने अकॉर्डिंगली इसमें यूज करेंगे, ये नहीं कि आपको यही वाले डिस्क्रिप्टर या कॉम्पिटेंसी लेवल्स यूज करने हैं, सिलेक्ट अकॉर्डिंगली, remembers several steps in the sequence of a task, guides on other child also and controls impulses, right? तो ये क्या है हमारे पास, हमने डिस्कस किया बाल वाटिका 1, 2 and 3 के लिए एक सैंपल एग्जाम्पलर HPC. मैं अगली वीडियो में आपको और भी एक बेटर टेम्पलेट दिखाऊंगी and you can use that also if you want to do in detail. There are number of ways the same can be done. Let me tell you my dear educators, आप इसको ऐसे सिंपल भी कर सकते हैं और ब्यूटीफाई करके भी कर सकते हैं और डिटेल में भी कर सकते हैं, पोर्टफोलियो फॉर्मेट में भी कर सकते हैं. That is entirely up to you कि आप कैसे करना चाहते हैं. Stay tuned to Mentoring the Mentors for more on HPC and other topics. Thank you, all of you. Thanks for watching Mentoring the Mentors. Have a nice day.